Hello, you're watching Hornbill TV's Prime Time, and now the headlines. A terrorist approached from Jordan in a truck, exited the vehicle and opened fire on Israelis, killing 3 Israeli civilians today. Addressing the 44th Olympic Council of Asia General Assembly, Union Minister J.P. Nadda on Sunday said that under PM Modi, the budgetary allocations for the Ministry of Youth Affairs and Sports have been increased to 3-folds. Palestinian ambassador to India Adnan Abu al-Haija urged India on Sunday to mediate the current ongoing crisis between Palestine and Israel and called on India to facilitate a ceasefire, organize an international conference and back the creation of an independent Palestinian state. Following the death of 8 people in a building collapse in the Transport Nagar area of Lucknow on Saturday evening, Lucknow Joint Commissioner of Police Amit Verma on Sunday said that a committee will be formed to investigate the reasons for the building collapse. In response to escalating drone attacks by suspected Kuki militants, Manipur Police and Assam Rifles deployed an advanced anti-drone system to counter rogue drones. Now the news in detail. In a significant development, Defence Minister Rajnath Singh has on Saturday urged residents of Pakistan-occupied Kashmir to join India. He said unlike Pakistan, India considers the people of Pakistan-occupied Kashmir as their own and has urged them to join India. He was addressing a public rally in the Ramban area of Jammu on Sunday as part of the Bharatiya Janata Party's campaign for the upcoming assembly polls in the Union Territory of Jammu and Kashmir. After seeing the development in Jammu and Kashmir, the people of Pakistan-occupied Kashmir will say that they do not want to stay with Pakistan, he said. They want to go with India, Singh said. The people in Pakistan consider the people of Pakistan-occupied Kashmir as foreigners, but India considers the people of Pakistan-occupied Kashmir as India's own. Come and join us, he said. He claimed that Jammu and Kashmir would become the #1 state of India in case the BJP remained in power for 10 years there. Polling in the erstwhile state would be held in 3 phases, September 18th, September 25th and October 1st. The counting of votes will take place on October 8th. The National Conference and the Congress have formed a pre-poll alliance days ahead of the polls. और हमारा एक बगल में पाक अधिकृत कश्मीर है पीओके। क्या बदनाम है पीओके के बारे में? बहनों भाइयों, यहाँ भी सरकार बनाई है। यहाँ के विकास को देखकर पीओके के लोग कहेंगे कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। और मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं, अभी हाल में ही एक हलफनामा कोर्ट में देते हुए वहां के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा कि पीओके ये फॉरेन लैंड है। मैं पीओके के लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के लोग आपको फॉरेनर मानते हैं, आपको विदेशी मानते हैं, लेकिन भारत के लोग आपको विदेशी नहीं मानते हैं। पीओके के लोगों को हम अपना मानते हैं। आइए हमारे साथ आइए। बहनों भाइयों, तबाह किया है लोगों ने जम्मू कश्मीर को। Chairman of the Defence Research and Development Organization, Sameer V. Kamat, has said that the dimensions of war and conflict has gone beyond land, sea and air. Now it has expanded into information and space, for which nations who have superiority in these 3 areas will have significant edge in future wars, Kamat said. He said space is one of the most critical sectors where the country has to build its expertise and capabilities and get the cutting-edge technology necessary for it to win future wars. After the announcement of the new space policy and the private sector getting in, it has now opened up a wide area for the private sector to contribute and ensure that the country's needs are met in a short period, he said. The future is bright, he added. As you are aware, earlier wars were fought in 3 domains: land, air and sea. But in recent times, these domains now have expanded to include cyber, information and space. And it is the nations who have superiority in these 3 domains
are going to have a significant edge in fighting future wars. So my opinion is space is one of the most critical sectors where the country has to build its expertise, its capabilities, and get the cutting edge technologies necessary for it to win the future wars. So we have this capability, ISRO has built this capability in the country, but we don't have enough satellites to give total coverage over India's landmass and our areas of interest. The revisit times of our satellites are not as good as what we want. So with the private sector getting in after the announcement of the new space policy, it has now opened up a wide area for the private sector to contribute to this sector and ensure that whatever the needs of the country are will be met in a short period. I think the future is very bright because I have interacted with the startups which have got into the space domain after the opening up of the space sector. And this is one area which I said in my speech today is an area which is very conducive for the civil-military fusion. So whatever capabilities we build for our civil applications, similar technologies will be very useful for our military applications. So we have to exploit this civil-military fusion and build capabilities for both our civilian sector and the military sector. And at DRDO, we are working closely with the startups here, and we are promoting R&D in this critical domain through our Technology Development Fund. A terrorist approach from Jordan in a truck exited the vehicle and opened fire on Israelis, killing 3 Israeli civilians today. Following the terror attack, Alex Chen, the manager of the Allenby Bridge crossing, confirmed that the crossing has been closed for inspections until further notice. Chen also reported that the terrorist was neutralized by a security guard from the Israel Airports Authority at the scene. Israel Defense Force soldiers have been deployed to the scene and are investigating the possibility that the truck was rigged with explosives. We'll be right back after a short break, so stay tuned for more news. सुनो आ गया आरबीआई का अल्टीमेट क्विज चैलेंज 90 इयर्स का है सेलिब्रेशन और आरबीआई लाया अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए एक सुपर ऑल इंडिया क्विज। मुकाबला है मजेदार, करो तैयारी जोरदार, होंगे लेवल्स 4 और हर लेवल पर मिलेंगे प्राइजेस जोरदार, कोई रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं। सारी डिटेल्स आरबीआई के वेबसाइट पर। आरबीआई 90 क्विज, सीखो खेलो जीतो। गरमते पेट और मन के ठंडा रखे तो की नकी खाली मीठा है लगे इदु हेल्दी আছে UHT ट्रीटेड और साफा भी আছে थर्ड इदु फ्रेश আছে और मुजाबी वाओ केविंटर लस्सी मीठा भी हेल्दी भी केविंटर लस्सी मीठा भी हेल्दी भी। It only takes one prick of a needle to save lives. Get tested for HIV. RCF दालमिया सीमेंट है RCF एक्सपर्ट, यानी रूफ, कॉलम और फाउंडेशन एक्सपर्ट। दालमिया सीमेंट, RCF स्ट्रॉन्ग तो घर स्ट्रॉन्ग। Welcome back. Tripura Chief Minister Dr. Manik Saha has flagged off 16 vehicles aimed at ensuring road safety and enhancing transportation facilities across the state. He introduced the vehicles during a road safety program organized by the State Transport Department in Agartala. Manik Saha said the road safety program should have been organized earlier, but there was a flood, so this program was done today.
SAR said 8 interceptor vehicles have been given to the police and traffic from 16 transport offices. Further, 8 vehicles have been given to the transport office. This has been done with a view to develop infrastructure, the Chief Minister said. Further, school has also been opened here where driving training will be given. Women have been trained and certificates have been given, the Tripura Chief Minister said. होना था, यहाँ पर अभी फ्लड हो गया, आप जानते हो, तो इसीलिए हम लोग अभी आज ही का प्रोग्राम बनाया और हमारे साथ हमारा ये जो मिनिस्टर साहब सुशांत चौधरी भी हमारे साथ थे, डीजीपी साहब भी थे, हमारा मेयर साहब भी हमारे साथ थे। तो आज हम लोग इस इवेंट को आज ने हम लोग कराया यहाँ पर। तो यहाँ पर टोटल हम लोग का 16 जो परिवहन दफ्तर है उनसे 8 इंटरसेप्टर जो गाड़ी ये दिया है पुलिस और ट्रैफिक को, और बाकी इनका परिवहन दफ्तर के लिए 8 गाड़ी हर डिस्ट्रिक्ट में 8 डिस्ट्रिक्ट में जाना है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, इस दिशा पर ये सब अभी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। 2 किताब भी यहाँ पर आज यहाँ पर उन्मोचन हुआ है ताकि ट्रैफिक रूल्स के बारे में, अवेयरनेस के बारे में सब पूरा उसमें ट्रैफिक ये परिवहन दफ्तर से ये आज हुआ है। और यहाँ पर जिरानिया में एक माने स्कूल भी खुला है जहाँ पर ड्राइविंग कैसे करना है, उसका किस तरह ड्राइविंग करना चाहिए, उसको लिए भी आज यहाँ पर कुछ हमारा हम लोग हमेशा कहते हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट, तो कुछ हमारे बच्ची सब इन लोगों को हम लोग रजिस्ट्रेशन कराए, उनको सर्टिफिकेट दिए। तो इस तरह ये इवेंट बहुत जरूरी है। आप जानते हैं त्रिपुरा में अभी इतना गाड़ी बढ़ गया है, 7.5 लाख के ऊपर गाड़ी यहाँ पर माने व्हीकल्स यहाँ पर हो गया है, और उसमें 5 लाख के ऊपर आपका माने 2 व्हीलर्स है। और काफी हद तक यहाँ पर एक्सीडेंट आप जानते हैं हर जगह जैसे होता है, यहाँ पर भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, लेकिन माने अगर उसका हम लोग स्टडी किए हैं कि जिस तरह यहाँ पर माने व्हीकल्स हुआ है उस हिसाब से इतना यहाँ पर एक्सीडेंट नहीं है। तो मैं समझता हूँ फिर भी कोई भी एक्सीडेंट माने हम नहीं चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत सारा परिवहन दफ्तर के थ्रू से हमारा मिनिस्टर साहब भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, डिपार्टमेंट का सभी सब मिलके कोशिश कर रहे हैं कि साइंटिफिक ढंग से उसको कैसे हम लोग जीरो एटलीस्ट 10% तक कम से कम रिड्यूस करें, इस दिशा पर काम कर रहे हैं। मैं इसीलिए आज का दिन सबको मैं कहूंगा जे नो हरी नो वेरी, आराम से, और खास करके बहुत लोग आप जानते हैं जे एडिक्ट होके भी आजकल गाड़ी वगैरह चलाते हैं, उससे दूर रहे और बचे। In a significant enforcement action, the Central Bureau of Investigation has caught 3 people, including a superintendent of the Central Goods and Services Tax, Anti-Evasion of Mumbai, red-handed while accepting a bribe of Rs 20 lakh. It was informed that Rs 30 lakh of bribe amount was allegedly delivered through Hawala. According to the FIR, the CBI registered a case on a complaint against 8 accused persons, including 6 officers of the Mumbai CGST, comprising an additional commissioner, a joint commissioner, 4 superintendent and 2 private persons, including a chartered accountant, on allegations of bribery, etc. It is alleged that when the complainant visited the CGST office, Santa Cruz, in the evening of September 4th, he was kept confined in the office the whole night and released after about 18 hours on September 5th. It was also alleged that during the complainant's confinement, one of the accused superintendents, CGST, demanded Rs 80 lakh bribe for not arresting him, which was subsequently reduced to Rs 60 lakh. Further, it was alleged that 3 other colleagues of said superintendent also joined him in pressurizing the complainant, including through repeated use of force and hurling abuses. The complainant was allegedly made to call his cousin while in confinement to convey the demand of undue advantage by CGST officers for not arresting the complainant and favouring him in an ongoing probe by the CGST. It was also alleged that the cousin of the complainant subsequently contacted an accused chartered accountant, who further contacted other accused private persons and senior CGST officers, including accused joint commissioner CGST. Both accused CA and other accused private persons visited the CGST office during the intervening night and negotiated the bribe with CGST officials. Also alleged that the bribe demand was finalized for an amount of 60 lakhs to be delivered to CGST officers through the accused chartered accountant. Out of the negotiated bribe of 60 lakhs,
Rupees 30 lakhs was allegedly paid by cousin of complainant through an Angadia. Further, it was alleged that only then that the complainant was allowed to leave CGST office the next day. CBI laid a trap and caught the accused chartered accountant red-handed while accepting an amount of Rupees 20 lakhs on behalf of CGST officers out of the remaining bribe amount. Further, controlled bribe delivery was done to another accused private person who was to further deliver the bribe to CGST officers through accused superintendent of CGST, the bribe receiver. Searches were conducted at 9 locations at the official and residential premises of the accused persons in and around Mumbai, which led to the recovery of various incriminating documents. The death toll in the Lucknow building collapse rose to 8 after rescuers recovered 3 more bodies from the debris on Sunday morning. 28 people have been injured in the incident. The collapsed building located in the Transport Nagar area housed godowns and a motor workshop. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath took cognizance of the building collapse incident and instructed officials to hasten the relief efforts. Meanwhile, Defence Minister and LSMP from Lucknow Rajnath Singh expressed grief over the deaths in the incident. Rescue operations have been intensified as the fire department, SDRF and NDRF teams are active at the spot. The SDRF recovered the bodies of Raj Kishore 27, Rudra Yadav 24 and Jagrup Singh 35 during the rescue operation, according to Relief Commissioner GS Naveen. A senior district administration official said that the focus is now on ensuring no one else remains trapped under the rubble. The rescue operation is ongoing. देखिए, अभी तक जो है कल से जो हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, इसमें 8 लोगों के जो है कोलैप्स होने की स्थिति आई हुई है, जिनकी हम लोग जो है इसका आगे मेडिकल कॉलेज वगैरह भेज करके इनके डेड बॉडी के संदर्भ में जो आवश्यक अन्य कार्रवाइयाँ हैं वो विधिक स्तर पर की जा रही हैं। 28 लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज भी सुनिश्चित किया जा रहा है, उनका प्रॉपर इलाज कराया जा रहा है। मृतकल की संख्या 8 है और हम उम्मीद करते हैं और हमारी प्रार्थना भी ईश्वर से ये कर रहे हैं कि यहाँ पर अब जो संवेदनशीलता के आधार पर रेस्क्यू ऑपरेशन तो पूरा किया जा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो लोग अभी तक जिसके कोलैप्स होने की स्थिति थी उनको हम लोग निकाल चुके हैं। बाकी लोगों के लिए भी हम लोग संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन हम लोग 5-6 घंटे में और आगे 5-6 घंटे में इसको फिनिश कर लेंगे और जो अगल बगल की जो बिल्डिंग्स हैं जो संवेदनशील हैं उसको भी सिक्योर करना है। हाँ, आशंका नहीं है, फिर भी पूरी संवेदनशीलता के साथ इस कार्रवाई को जब तक हम पूर्ण नहीं कर रहे हैं तब तक पूरा ऑल ड्रिल्स जो है, ऑल मेडिकल ड्रिल्स एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की, हम लोग इसको पूरा कर रहे हैं कार्रवाई। घायलों के बारे में अभी घायलों के लगभग स्थिति ठीक है। अभी घायलों का पूरा अभी जो हॉस्पिटल से हम लोगों को जो डॉक्टर्स वगैरह से जो अपडेट मिल रहा है उसके अनुसार सबका प्रॉपर इलाज हो रहा है। उनमें सारे लोगों को पूर्ण रूप से उनको कोई संवेदनशीलता नहीं है, उनकी जान बच गई है। अभी यहाँ पर जनपद स्तर की जो टीमें हैं हमारी लखनऊ कमिश्नरेट की, उस फोर्स की वगैरह की और जो हमारी टेक्निकल टीम, उसके अलावा स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स का और एनडीआरएफ की टीमें, टेक्निकल टीमें लगी हुई हैं। दे आर डूइंग वेल। कोशिश किया जा रहा है कि समय से हम लोग इसको पूरा कर लें। देखिए, इस ऑपरेशन में इस बात को पूरा ध्यान दिया जा रहा है कि ऑपरेशन के दौरान जल्दी से जल्दी अगर जिसमें भी संभावना है, कोई घायल ऐसा है जिसको हमारी ऑपरेशन की वजह से और कोई घायल ना हो, इसका पूरा ध्यान रखते हुए हम लोग ऑपरेशन को नहीं, कुछ नहीं, बिल्डिंग जर्जर थी तो इस जर्जर वजह से, बिल्डिंग की वजह से जो भी है वो नेचुरल डिजास्टर है, तो उसको हम लोग इसको पूरा कर रहे हैं कि यहाँ से जल्दी से जल्दी काम। The building, identified as the Hornbill building, was used as a warehouse for a pharmaceutical business. The collapse occurred around 5 p.m. on Saturday. Police reported that the building, constructed about 4 years ago, was undergoing some construction work at the time of the collapse. Most of the victims were working on the ground floor when the incident happened. The injured have been taken to various hospitals, including Lok Bandhu Hospital. We'll now take another short break, so stay tuned for more news.
नए भारत का नया उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर है अग्रसर। स्थानीय उत्पादों को यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो ने दिया है इंटरनेशनल मार्केट। पहले संस्करण में 70,000 से अधिक खरीदारों और 3 लाख से अधिक आगंतुकों से कारोबारियों का बढ़ा है हौसला। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण का आयोजन 25 से 29 सितंबर 2024 तक ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। आइए इस वैश्विक व्यापारिक महाकुंभ का हिस्सा बनकर अपने व्यवसाय को दें नई दिशा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। The ABC for HIV prevention. Welcome back. Following the death of 8 people in a building collapse in the Transport Nagar area of Lucknow on Saturday evening, Lucknow Joint Commissioner of Police, Law and Order, Amit Verma, on Sunday said that a committee will be formed to investigate the reasons for the building collapse. Verma said a committee will be formed that will investigate the reasons for the collapse of the building. Structural engineers and experts can only provide a valid reason for such an incident. Meanwhile, Prime Minister Modi on Sunday announced an ex gratia of ₹2 lakh each for the families of the deceased and ₹50,000 for those injured in the building collapse in Uttar Pradesh's Lucknow. देखिए, आंकड़ा वही है जो अभी जो आप लोगों को रात में दिया गया था। जो 8 लोग राहत साहब के यहाँ से आपको सूचना मिली है कि वहाँ 8 लोगों की तो जो मृत घोषित किए गए हैं और लगभग 30 के करीब जो लोग घायल थे, तो वो जिनका उपचार भी अस्पतालों में चल रहा है, कुछ लोग डिस्चार्ज भी हो गए हैं। तो यही आंकड़ा अभी जो आपके पीछे जो रेस्क्यू ऑपरेशन और ये चल रहा है, इसमें ये भी हम लोग इसलिए चला रहे हैं कि हो सकता है कि शायद कोई एकाध व्यक्ति फंसा हो, लेकिन लगभग आंकड़ा जो है वो उसका मिलान हो चुका है। क्या स्थिति है? जो घायल हैं उनके बारे में क्या है? घायल सभी का उपचार हो रहा है। हम लोग भी रात उनसे मिल के आए थे। अभी भी हमारी एक टीम वहाँ है, डॉक्टर्स लगातार नज़र रखे हुए हैं उस पर और ज़्यादातर लोग खतरे से बाहर हैं उस पर। क्योंकि बिल्डिंग ये जो कोलैप्स हुई, क्या अभी कुछ जांच की जा रही है या कुछ निकल के सामने आया कि क्या रीज़न है इसके लिए? देखिए, ये एक्सपर्ट्स इस चीज़ के बारे में कमेटी गठित होगी, वो देख के इसमें सारी चीज़ें बता पाएगी। जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं, अन्य जो एक्सपर्ट्स हैं, वही इसमें एग्जैक्ट कारण तो बता पाएंगे। The death toll in the Lucknow building collapse rose to 8 after rescuers recovered 3 more bodies from the debris on Sunday morning. 28 people have been injured in the incident. The collapsed building, located in the Transport Nagar area identified as the Hornbill building, was used as a warehouse for a pharmaceutical business and a motor workshop. Police reported that the building, constructed about 4 years ago, was undergoing some construction work at the time of the collapse. Most of the victims were working on the ground floor when the incident happened. The injured have been taken to various hospitals, including Lok Bandhu Hospital. Rescue operations are still underway by the NDRF and SDRF teams, along with the fire department. And that was all for this hour's bulletin. For more news and updates, stay tuned to Hornbill TV. Goodbye.